Topic for presentation today is Work Koyanagi-Harada disease. Introduction. Work Koyanagi-Harada disease is a multisystemic disorder characterized by granulomatous panuveitis with exudative retinal detachments that is often associated with the neurologic and cutaneous manifestations. In 1906, there was a walk that found the poliosis plus ocular inflammation in a patient, and then there was another person, Harada, who found primary posterior uveitis plus exudative retinal detachment plus CSF in the CSF pleocytosis. And then the third person was Koyanagi, who found bilateral chronic iridocyclitis and skin and hair depigmentation. So collectively, they in 1947 they summed it up as VKH, which was termed as uveitis with poliosis, vitiligo, alopecia, and dysarthrosis, which is a hearing disorder. Uh, Epidemiology. It is more common in the Asian, Middle Eastern, Hispanic, and Native American population. HLA-DR4 and HLA-DR53, HLA-DQ8 is normally associated with the VKH. How it is clinically presented? It is more common in females. Most patients are in their second or fifth decades of life. Children may also be affected. It has divided the following stages: prodromal stage, uveitic stage, then the chronic stage, and chronic recurrent stage. In the prodromal stage, that may last only a few days, and headache, nausea, dizziness, fever, orbital pain, and meningism is seen. Light sensitivity and tearing may occur 1 to 2 days following the above symptoms. Rarely, neurological signs like cranial nerve palsies and optic neuritis may be seen, and on CSF pleocytosis is found. In the acute uveitic stage, it presents with the blurring of vision. It is bilateral. One eye may be affected first, that is followed a few days later by the second eye. This uveitis consists of a thickening of the posterior choroid with elevation of the peripapillary retinochoroidal layer. Then multiple serous retinal detachments may be seen. Hyperemia and edema of the optic nerve head is also found on the fundus. The inflammation eventually becomes diffuse, extending into the anterior segment and revealing the presence of flare and cells in the interior chamber. Less commonly, mutton fat, capes, small nodules on the iris surface and pupillary margin may be seen. The inflammatory infiltrates in the ciliary body and choroid may cause forward the displacement of the lens iris diaphragm, leading to acute angle closure, glaucoma, or annular choroidal detachment. In the chronic stage, that occurs several weeks after the acute uveitic stage, which is characterized by development of vitiligo, poliosis, and depigmentation of the choroid. Prelimbal vitiligo is also found, and it is known as Higuera sign, may develop at this stage, and it is more common in Japanese patients. This is the patient which shows the poliosis on the upper lid skin, and poliosis and the vitiligo. Here we can see the posterior synechiae and depigmentation area involving the iris and loss of pigment at the limbus. Then the chronic stage. Choroidal depigmentation occurs a few months after the uveitic phase. This leads to the characteristic pale disc with a bright red-orange choroid known as the sunset glow fundus. The juxtapapillary area may show marked depigmentation. In Hispanics, the sunset globe may show foci of RPE changes in the form of hyperpigmentation or hypopigmentation. At this stage, a small yellow, well-circumscribed area of chorioretinal atrophy may appear mainly in the inferior mid-periphery of the fundus. This convalescent phase may last for several months.
This is a picture showing the fundus, and you can see the sunset glow. There is multifocal areas of exudative retinal detachment. It's a picture of Asian patient, and then this is a patient Hispanic woman. And here we can see revealing, we can see oval, non-pigmented and pigmented retinal pigment epithelial atrophic lesions. Then there is the chronic recurrent stage. The chronic recurrent stage consists of a smoldering panuveitis with acute episodic exacerbations of the granulomatous anterior uveitis. Recurrent posterior uveitis with exudative retinal detachment is uncommon. The anterior uveitis may be resistant to the local and systemic corticosteroid therapy. Iris nodules may be seen during this phase. These appear as round, whitish, well circumscribed nodules on a background of atrophic iris stroma. We can see the iris nodule in a chronic recurrent stage. Now, this is multiple small nodules in the iris and extensive posterior synecdoche is seen. Okay, the chronic recurrent stage, the most visually debilitating complications of the chronic inflammation during this stage appears to be the development of subretinal neovascular membranes. Other features may include the posterior subcapsular cataract, glaucoma, which is angle closure, may be open angle, and posterior synechiae. Then the linear pigmentary changes, they are similar to those seen in the ocular histoplasmosis syndrome, and interior venous anastomosis may be seen in the occasional in some patients. This is a picture of 28-year-old Hispanic female which developed the submacular choroidal neovascular membrane, and hemorrhage is seen during the chronic stage. Now, diagnostic criteria. American Uveitis Society in 1978 made this criteria, and they said because of the variations in the clinical presentations of VKH, the AUS recommended the following criteria. It says the absence of any history of ocular trauma or surgery, and the presence of at least 3 or 4 of the following signs. That may be bilateral chronic iridocyclitis. Then it may be posterior uveitis, including the exudative retinal detachment. Then sees the neurological signs of tinnitus, neck stiffness, cranial nerve or central nerve disorders, or cerebrospinal fluid pericytosis. And the last one is the cutaneous finding of alopecia and poliosis and or vitiligo that occurs at the end. The authors concluded that AUS criteria for diagnosis of VKH may not be adequate, taking into account the multisystemic nature of VKH and allowing for the different ocular findings present in the early and late stages of the disease. The first international workshop on VKH proposed revised diagnostic criteria to include clinical manifestations at various stages of the disease. The revised diagnostic criteria proposed by the first international workshop on VKH disease, it divided into the complete VKH disease, which shares bilateral ocular involvement, neurological findings, and the auditory findings. It's, and then the antigumentary findings, which the skin hair changes. Then comes the incomplete VKH disease. It has the bilateral ocular involvement, neurological or the auditory findings, or integumentary findings. And probable VKH disease, it is independent only bilateral ocular involvement. Pathology. Pathology it is a non-necrotizing diffuse granulomatous inflammation involving the uvea. The peripapillary choroid is the predominant site for the granulomatous inflammatory infiltrations, and a similar but less prominent inflammation is noted in the equatorial and interior choroid. Pathogenesis. Although the exact cause for the inflammation is unknown, but inflammation, it is autoimmune, idiopathic autoimmune disease, which is inflammation is directed at the melanocytes and which is driven by the T lymphocytes. Cutaneous injury or viral infection may be a risk factor.
HLA-DR1 or HLA-DR4 was found to be found in 84% of the patients with VKH disease. Lab investigations, we need to mainly it's clinical diagnosis when a patient presents with ocular and extraocular manifestations. When the disease presents without extraocular changes, then we go for the FFA. We can have the lumbar puncture, ultrasonography, and the ICG angiography and optical coherence tomography, which is OCT. Okay, on FFA, acute stage. On acute stage, numerous punctate hyperfluorescent dots at the level of the RP are found. These dots enlarge and stain the surrounding subretinal fluid. Then in the late phase, multiple serous retinal detachments with the pooling of the dye in the subretinal space. Over 70% of patients show the disc leakage as well. And in chronic and recurrent stages, we see the moth-eaten appearance with multiple hyperfluorescent RP window defects without progressive staining. This is a picture of FFA which shows multiple hyperfluorescent dots at the retinal pigment epithelium level. It's early AV phase. This is the late phase, and the most prominent picture finding over here is the disc staining, and the fluorescent dots they can be seen as well. Lumbar puncture is done rarely, but 80% of patients with the VKH disease had a CSF pleocytosis that consists mostly of the lymphocytes. The pleocytosis was present in 80% of patients within 1 week, and in 97% of patients within 3 weeks of the onset of the uveitis. It is transient and it resolves within 8 weeks. Okay, on ultrasonography, we see the thickening of the posterior choroid. The choroidal thickening is most prominent in the peripapillary area. And we can, there is also serous RD located in the posterior pole or inferiorly. Vitreous opacities may be seen, posterior thickening of the sclera. UVM examination during the uveitis stage may reveal a shallow anterior chamber, cilio-choroidal detachment, and thickened ciliary body. Okay, on ICG and on a uveitic stage, there is a delay in the choriocapillaries and larger choroidal vessel perforation. Multiple hyperfluorescent spots are noted throughout the fundus, and hyperfluorescent pinpoint changes are observed in areas of exudative retinal detachment. Chronic recurrent stage, we see multiple hyperfluorescent spots, and recently OCT has been used to monitor the resolution of serous RD in patients which are treated by the corticosteroids. This is the we see the hyperfluorescent dark spots in ICG. And on a differential diagnosis, the most important one is the sympathetic ophthalmia. Sympathetic ophthalmia can present with bilateral panuveitis associated with retinal detachment and meningism, but history, most important is the history of penetrating ocular injury. Then the uveal effusion syndrome. It may clinically mimic the VKH disease, and geographically, the effusion syndrome may reveal numerous fluorescent blotches in the subretinal space during the serous detachment phase. The syndrome can involve both eyes, although not simultaneously. Unlike VKH disease, the effusion syndrome lacks the intraocular inflammation. And posterior uveitis. It affects mainly the women. It's bilateral and it may present with pain, photophobia, loss of vision, and the vitreous often reveals cells. Exudative macular detachment and choroidal folds may be noted. Usually, patients with bilateral involvement have a history of rheumatoid disease. Ultrasonography can help to differentiate posterior scleritis from the VKH disease. The former reveals flattening of the posterior aspect of the globe, thickening of the posterior coats of the eye, retrobulbar edema, and a high internal reflectivity of the thickened sclera. Then primary intraocular lymphoma or the uveal lymphoid infiltration, APMPPE, is acute posterior multifocal pleurocyte pigment epitheliopathy and sarcoidosis. Then treatment.
Steroids are the main line of treatment. Early and intensive use of this systemic steroids, followed by slow tapering over 3 to 6 months, is the treatment of choice to suppress the intraocular inflammation and to prevent the complications. It may prevent the progression of the disease to the chronic recurrent stage and may also reduce the incidence or severity of the extraocular manifestations, including the development of the sunset glow fundus. Recurrences do not respond well to systemic corticosteroid treatments. Such patients may show some initial response to subtenon injections of triamcinolone, but they usually require immunosuppressive or cytotoxic agents such as cyclosporins, azathioprine, cyclophosphamide, and chlorambucil, etc. Corticosteroids, as I mentioned, we give oral prednisolone, which is 100 to 200 milligram initially, followed by gradual tapering over 3 to 6 months. Then pulse dose of the IV methylprednisolone 1 gram per day for 3 days, followed by gradual tapering of the oral prednisolone over 3 to 6 months. Immunosuppressive agents we can give cyclosporin, which is 5 milligram per kg per day, and cytotoxic agents there is azathioprine, mycophenolate, and cyclophosphamide, etc. Patients with inflammatory cell infiltration in the interior chamber require topical corticosteroids and cycloplegics. We also prescribe the topical corticosteroids and cycloplegics to reduce the interior uveitis, ciliary spasm, and to prevent the posterior synecdoche formation. Prognosis: with initial high dose systemic corticosteroids followed by gradual tapering will usually have a fair visual prognosis. Nearly two-thirds of the patients retain 6/12 or better visual acuity. On average, most patients require treatment for 6 months. Complications that include the cataract, open angle, close angle glaucoma, choroidal neovascularization, subretinal fibrosis, optic atrophy. This fundus shows a subretinal fibrosis in a patient with a chronic recurrent stage of VKH disease, as you can see. Thank you. एक प्रॉपर वीकेएच तो नहीं देखा, लेकिन वीकेएच में क्या ऐसी चीज है जिस पे आपको शक पड़ना शुरू होना चाहिए? सर हिस्ट्री सारे साइंस सिम्टम्स हैं, इसमें कुछ कॉमन भी तो होगा। सनसेट ग्लो फेस के अंदर पेशेंट आया फिर हम यूवेटिस को है और जनरल यूवेटिस है, तो आपको किस चीज पे शक करना शुरू हो गया कि ये वीकेएच के बारे में सोच सकते हैं? सर एक तो हिस्ट्री वो कोई नहीं देगा ऑकुलर पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा की, प्लस फंडस पे इफ वी गो देन देयर विल बी पोस्टीरियर मल्टी फोकल पैची बहुत सारी काजेज। ओके, वो उसकी क्या-क्या काजेज हैं? विशेष ब्राइटिस हो रहा है, मल्टीफोकल जो ब्राइटिस हो रहा है, तो उसकी क्या-क्या काजेज हो सकती हैं? इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट साइन है वो सेंसरी डिटैचमेंट। यस मैकुलर। वो बहुत कम यूवेटिस है जो कि यूवेटिस विद कोरोइडाइटिस विद सेंसरी डिटैचमेंट आते हैं। वो कौन-कौन से हैं? अभी आपने डिस्कस की। सार्कोइडोसिस में भी है। यूवेटिस विद सेंसरी डिटैचमेंट, यूवेटिस, कोरोइडाइटिस एंड सेंसरी डिटैचमेंट, उसमें कौन-कौन से यूवेटिस हैं? एक तो यही आ गया वीकेएच। सेकंड उमर सेंसरी डिटैचमेंट की क्या-क्या क्या करना एक तो मैस्कुलेट सिंड्रोम आ गया जिसमें हम कोई भी लिम्फोमा या फिर ऐसी चीज कोई भी इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। सेकंड एपीएमसी है, एपीएमसी इज द सेकंड मोस्ट कॉमन सेंसरी डिटैचमेंट। थर्ड जो हम बहुत कॉमनली देखते हैं सेंसरी डिटैचमेंट विदाउट यूवेटिस भी हो सकता है, जैसे सीएससीआर है, लेकिन विद यूवेटिस की बात है। लिम्फोमा हो गया, वीकेएच हो गया और यूवेल फ्यूजन सिंड्रोम हो गया। आमतौर पर कोई और यूवेटिस इस तरह से सेंसरी मल्टीफोकल सेंसरी डिटैचमेंट नहीं करता। तो जब भी आपको सेंसरी डिटैचमेंट आएगी तो आपने सोचना शुरू कर देना है कि ये वीकेएच की तरफ बात आ सकती
और एनी एज, जब स्पेसिफिक एज हम उसको करते हैं कि जब उसी एज पे ज़्यादा कॉमन हो। ये ज़्यादातर तो मैंने जो पेशेंट देखे हैं यंग देखे हैं, मतलब हार्डली तो 15 ईयर्स की लड़की है, कई पेशेंट्स हैं जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उससे 12 तो वो कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन, और उनको हम इतना रिकरेंट डिजीज है कि उनको मेरे आने से पहले उसका कॉन्स्टेंट पहले वो सिगरेट शुरू कर सकते होते हैं, इसमें एक्सपीरियंस होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट साइंस की सेंसिटिव अटैचमेंट। प्रोड्रोमल फेज का क्या मतलब होता है, मतलब ये क्या उसका कॉन्सेप्ट क्या है? हम हमेशा कहते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोड्रोमल फेज है, उसका क्या रोल है? क्या है डिजीज इज आउट, क्यों होता है? व्हाई इज इट प्रोड्रोमल? Inflammation has started. इससे इम्यून डिसऑर्डर, तो उससे क्यों होता है? एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं जो Usually पहले जो डिजीज होगी वो मैं आपको सब मैनिफेस्टेटिव इम्यूनोलॉजिकल साइंस है, जो बाद में लेटर द रिएक्शन वो इम्यूनोलॉजिकल साइंस नहीं आते, तो क्योंकि ये इम्यून रिएक्शंस की वजह से हमें ये चीजें नजर आती ये हैं इस बात अगेंस्ट एंटीजन जो हमें against the violence. जी, Most likely, all of these immunological disorders, diseases, they are having a viral prodrome. Into simple prodrome is a viral prodrome. कोई fever, arthralgia, pain, rash, ये सारे इनके साथ एसोसिएट होते हैं। और आपकी uveitis की डायग्नोसिस को आपकी मैस्कुलर सिंड्रोम से डिफरेंशिएट करने के लिए आपको प्रोड्रोमल फेज आपको बहुत मुश्किल आती है। अच्छा, इसके लिए जो अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ स्पोंडिलाइटिस क्या क्या होगी, इस तरह का ग्रेनुलोमेटस यूवेइटिस से स्पोंडिलाइटिस के साथ वेरी तो सारे वाइट बॉक्स सिंड्रोम्स में आ जाते हैं। सारे वाइट बॉक्स सिंड्रोम आ गए, मसलन विद ग्रेनुलोमेटस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है ना, वो हमेशा साइंस की है। हम आपकी डिजीज की डिफरेंशियल डायग्नोसिस लेके बैठ जाते हैं, देयर इज नो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। डिजीज को हमने डायग्नोस कर ली, तो हम उस डिजीज तक पहुंच गए, देयर इज नो डीडी। डीडी इज ऑफ साइंस। तो हमारे पास कोरोडाइटिस की डिफरेंशियल डायग्नोसिस होनी चाहिए, इसमें सारे वाइट बॉक्स सिंड्रोम और सारे जो है जो कुछ इसमें करते हैं, उसमें सिम्पैथेटिक ऑप्थेल्मिया और सिम्पैथेटिक ऑप्थेल्मिया में कभी सिम्पैथेटिक ऑप्थेल्मिया का केस देखा है? वो कैसे प्रेजेंट करते हैं? फिर नॉर्मली पेशेंट्स का ओल्ड ट्रॉमा की हिस्ट्री के साथ और अदरवाइज सबसे पहले कॉम्बिनेशन लॉस के साथ पेशेंट आपको प्रेजेंट करता है नियर डिफिकल्टी के साथ, और आपको वो इसके डीडी में क्यों रखा है उन्होंने? हालांकि वो तो कोई तुक नहीं बनती उसको। ग्रेनुलोमेटस पैनिकुलेटिस, इससे क्योंकि ये भी यूवेइटिस ग्रेनुलोमेटस करता है। अब ग्रेनुलोमेटस यूवेइटिस की क्या क्या डीडी हो सकती है? एक तो सिम्पैथेटिक ऑप्थेल्मिया हो गया, एक वीकेएच होगी, और ट्यूबरकुलोसिस कैन कॉज एनीथिंग, और और क्या है इसमें? ग्रेनुलोमेटस यूवेइटिस हो गया और सेंसिटिव अटैचमेंट हो गई, और कोई इंपॉर्टेंट साइंस का किस पेशेंट में शक पड़ा? आपने जो डिजीज डायग्नोस करनी है, क्या आपको शक कब पड़ा? आपने अपने जो डिजीज नैरो डाउन कर रहे हैं, तो आपको किस टाइम में वीकेएच का शक? स्किन डिफिगमेंटेशन वो तो बात नहीं, वो तो आ गया, तो फिर तो हम बहुत ज्यादा बायलैटरल लेजिस्लेटिव बायलैटरल लेजिस्लेटिव बॉडी में हो गया नहीं चीज विद ग्रेनुलोमेटस। उसके दो साइन जब भी इकट्ठे होंगे तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि हम वीकेएच पे जा सकते हैं। जैसे वीकेएच पे जाना शुरू करेंगे तो हमें डीडी निकालते हैं। एक्सेप्ट आर्टिकल में डीडी निकाल दी, मैंने देख लिया एपीएमसी ये नहीं है, ये लिम्फोमा नेस्टर सिंड्रोम से एसोसिएट नहीं है। हमने इसकी बाकी एसोसिएशन जो देखे, हमें यूजुअल डिफ्यूजन सिंड्रोम का रजिस्टर क्लियर हो तो इसमें आना ही चाहिए डीडी में, लेकिन ये सारा कुछ हमने इसको निकाल दिया। अब हमारे पास रह गया कि अच्छा ये तो निकल गया, या वीकेएच ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो गया। अब हमारे पास रह गया कि हम कोरोडाइटिस की बाकी काजेस देख लें। रेयर काजेस ऑफ सेंसिटिव अटैचमेंट, एनीथिंग कैन कॉज सेंसिटिव अटैचमेंट, एनी यूवेइटिस कैन कॉज सेंसिटिव अटैचमेंट टू सम एक्सटेंट। उसमें आपने आगे बढ़ गई फाइब्रोसिस, ट्यूबरकुलोसिस और syphilis, syphilis, disease, systemic sclerosis, Lyme's disease, Lyme disease, granulomatous, एसोसिएटेड ग्रेनुलोमेटस है, दो चीजें हो चुकी हैं, ग्रेनुलोमेटस है और कोरोडाइटिस है। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? किडनी की सर्जरी कौन सी? किडनी का endogenous and
कैंसर जो ऑब्जर्व होता है उसके अंदर भी उसके बाद ग्लेनोमा हो सकते हैं। किडनी सब कौन से रिलेटेड है तो मुझे नहीं पता। एंटीरियर यूरेटस होता है नॉन ग्रेनुलोमेटस नॉन ग्रेनुलोमेटस लेकिन हम नॉन ग्रेनुलोमेटस तो हम ग्रेनुलोमेटस यूवेटाइटिस की बात करें। तो फिर उसके बाद जब हम इस डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे पहुंचेंगे, क्योंकि ओपीडी के अंदर आपके पास क्लासिक पेशेंट नहीं आना, यू हैव टू डायग्नोज इट फ्रॉम डिफरेंट फाइंडिंग्स। तो बीकेएच एक ऐसी डिजीज है कि मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 पेशेंट्स देखे हैं। इट्स अ वेरी रेयर डिसऑर्डर और आमतौर पर हमें बहुत कम मिलता है, लेकिन और मेरा अपना ख्याल है कि हम बिजी आउटडोर में शायद कुछ पेशेंट्स को मिस करते हैं और बाद में वो पेशेंट कहीं और चले गए। जो सर बिल्कुल सही। तो it is included in the white dot syndromes और अमेरिकन अकेडमी इसको जो लेटेस्ट नॉमेनक्लेचर कहती है इन्फ्लेमेटरी कोरियोरेटिनोपैथीज ऑफ इडियोपैथिक ओरिजिन। हमें एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है कि ये किस वजह, वायरस है या ऑटो इम्यून है या इन्फेक्शन है कि नहीं है। सो जो बेसिक, हाँ ये है हाइपर पिगमेंटेड जो डार्क रेसेस है उसमें ज़्यादा है, जैसे एशियंस में ज़्यादा है। लेकिन कुछ डार्क रेसेस हैं जिसमें नहीं है, जैसे सब सहारन अफ्रीकन है उसमें नहीं है। जो डार्क रेसेस हैं उसमें एशियन आ जाते हैं, मिडल ईस्ट के लोग आ जाते हैं और जो नेटिव अमेरिकन है वो आ जाते हैं। लेकिन अब सब सहारन अफ्रीका के लोग भी पिगमेंटेड हैं, डार्क, लेकिन उनमें नहीं है ये भी। सो एग्जैक्ट एटियोलॉजी इज नॉट नोन। अब हमने जो डिफरेंशिएशन करनी, जैसे अभी